हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून. आई थिंक ऑल आर फाइन. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेकेंड चैप्टर. Today's topic is constant elasticity demand curve. The elasticity of demand on different points on a linear demand curve is different, varying from 0 to infinity. But sometimes the demand curve can be such that the elasticity of demand remains constant throughout. Consider, for example, a vertical demand curve as the one depicted in figure 2.20a. We can see, whatever be the price, the demand is given at the level Q. A price never leads to a change in the demand for such a demand curve and is always zero. Therefore, a vertical demand curve is perfectly inelastic. Figure 2.20 B depicts a horizontal demand curve. In B, we can see horizontal demand curve where market price remains constant. जहाँ पर market price क्या रहते हैं? Constant रहते हैं, change नहीं होते हैं. Whatever be the level of demand for the commodity at any other price, quantity demanded drop to zero. Quantity कहाँ चली जाती है? Zero पर चली जाती है. And therefore is equal to infinity. A horizontal demand curve is perfectly elastic. जो horizontal demand curve होता है वो perfectly elastic होता है. Figure 2.20c depicts a demand curve which has the shape of a rectangular hyperbola. उसको क्या बोलते हैं? Rectangular hyperbola. This demand curve has a property that a percentage change in price along the demand curve also leads to equal percentage change in quantity. Therefore is equal to 1 at every point on the demand curve. This demand curve is called the unitary elasticity demand curve. We can see figure 2.20c. There's a unitary elastic demand curve. Next point is factors determining price elasticity of demand for a good. The price elasticity of demand for a good depends on the nature of good and the availability of close substitute of the good. वो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गुड, कि गुड की नेचर कैसी है, उसका क्लोज सब्सटीट्यूट है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है. कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से देखेंगे. नेसेसिटीज लाइक फूड, हमारी सबसे ज़्यादा नेसेसिटी क्या है? फूड, खाना. सच गुड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ के लिए. एंड द डिमांड्स फॉर सच गुड्स डू नॉट चेंज, इन सब चीज़ों के लिए डिमांड चेंज नहीं होती है. मच इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर प्राइस, उनके प्राइस की चेंजेस के लिए से. डिमांड फॉर फूड डज नॉट चेंज मच इवन इफ प्राइस गो अप, जैसे जैसे प्राइस गो अप होते हैं पर डिमांड चेंज नहीं होती है फूड की, क्योंकि फूड सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है लाइफ के लिए. ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर लग्जरीज कैन बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज. जो हमारी लग्जरी गुड्स हैं उनकी डिमांड रिस्पॉन्सिव किस पर होती है? प्राइस चेंजेस पर. अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लग्जरीज थिंग्स की डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस नॉर्मल रहते हैं तो मे बी लग्जरीज चीज़ें की डिमांड बढ़ सकती है. इन जनरल demand for a necessity is likely to be price inelastic, while demand for a luxury good is likely to be price elastic. Though demand for good food is inelastic, जो demand होती है food की वो inelastic होती है. The demand for specific food items are likely to be more elastic. जो specific food की demand होती है वो ज़्यादा elastic होती है. For example, we can see, think of a particular variety of pulse. हम सोचते हैं किसी पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ अ पल्स, दाल की वैरायटी के बारे में सोचते हैं. इफ़ द प्राइस ऑफ दिस वैरायटी ऑफ पल्सेस गो अप, अगर किसी दाल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, पीपल कैन शिफ्ट टू सम अदर वेराइटी ऑफ पल्सेस. तो पीपल क्या होते हैं? किसी दूसरी वेराइटी की दालों पर शिफ्ट हो जाते हैं, विच इज़ अ क्लोज सब्सटीट्यूट, जो उस दाल का क्लोज सब्सटीट्यूट है. द डिमांड फॉर अ गुड इज़ लाइकली टू बी इलास्टिक, तो यहाँ पर डिमांड क्या है? गुड की इलास्टिक दिख रही है. इफ़ क्लोज सब्सटीट्यूट आर इजीली अवेलेबल, अगर उस दाल का क्लोज सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल हो रहा है तब. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ क्लोज सब्सटीट्यूट आर नॉट इजीली अवेलेबल, अगर हमें क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहा है
द डिमांड फॉर अ गुड इज़ लाइकली टू बी इन इलास्टिक, तो वो डिमांड उस गुड की क्या होगी, इन इलास्टिक होगी. I think you can understand all. Next point is elasticity and expenditure. The expenditure on a good is equal to the demand for the good times its price. Often it is important to know how the expenditure on a good changes as a result of price change. ये इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उस गुड की कैसे प्राइजेस चेंज हो रही है. द प्राइस ऑफ अ गुड, गुड का प्राइस है, एंड द डिमांड फॉर द गुड, और डिमांड जो गुड की डिमांड है, आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. वो कैसे हैं, इन्वर्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से. अगर गुड की प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, अगर गुड की प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, और गुड की प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है. वेदर द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड गोज अप और डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस. अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा जा रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन द प्राइस डिपेंड्स ऑन हाउ रिस्पॉन्सिव द डिमांड फॉर द गुड इज़ टू बी प्राइस चेंज. तो किस पे डिपेंड करती है, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा हमें कि प्राइस में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा. कंसिडर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड. यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमारी गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है. इफ़ द परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी, अगर हमारी प्राइस में परसेंटेज जो है हमारी क्वांटिटी की वो डिक्लाइन हो रही है, ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, वो किससे ज़्यादा है कि हमारी जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है. द एक्सपेंडिचर ऑन द गुडविल गो डाउन, तो एक्सपेंडिचर के गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सी रो 2 in table 2.5. We can see this table. Firstly, changes in price, changes in quantity demand, percentage change in price demand, percentage change in quantity, impact on expenditure, nature of price elasticity of demand. For example, see row 2.5, which row 2 in table 2.5, which shows that as price of a commodity increase by 10%, its demand drops by 12%. You can see second row, अगर हमारी जो डिमांड है वो 10% अप हो रही है और जो क्वांटिटी है वो 12% डाउन हो रही है, तो वो कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. On the other hand, if the percentage decline in quantity is less than the percentage increase in the price, the expenditure on the good will go up. तो क्या हो जाएगी, अप चली जाएगी. We can see row 1 and we can see changes in price demand. अगर वो 10% बढ़ रही है डिमांड तो हमारी क्वांटिटी 8% कम हो जाएगी, तो ये कौन सी है, प्राइस इन इलास्टिक. And if the percentage decline in quantity is equal to the percentage increase in the price, the expenditure on the good will remain unchanged. तो goodwill क्या हो जाएगी, unchanged हो जाएगी. We can see third number row, जो परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में वो कितना है, 10%, और जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो भी 10% है, तो ये कौन सी है, यूनिट इलास्टिसिटी. नाउ कंसिडर अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द गुड. If the percentage increase in quantity is greater than the percentage decline in the price, the expenditure on the good will go up. See row 4, हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है 10% और जो क्वांटिटी है वो 15% बढ़ रही है, तो ये कौन सी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. On the other hand, if the percentage increase in quantity is less than the percentage decline in the price, the expenditure on the good will go down. We can see row number 5. यहाँ पर डिमांड 10% कम हो रही है और क्वांटिटी में 7% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कौन सी है, प्राइस इन इलास्टिसिटी. एंड इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी is equal to the percentage decline in the price, the expenditure on the good will remain unchanged. We can see row number 6, 10% डिमांड में डिक्रीमेंट हो रहा है और 10% ही क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नो चेंज. ये कौन सी है, यूनिट इलास्टिक. द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड would change in the opposite direction as the price change if
and only if the percentage change in quantity is greater than the percentage change in the price. If the good is price elastic, see row and 4 in table 2.5, the expenditure on the good would change in the same direction as the price change if and only if the percentage change in quantity is less than the percentage price in change in price. If the good is price inelastic, see row and 1 and 5. 1 and 5 you can see the expenditure on the good would remain unchanged. Unchanged है change in price if the good is unit elastic. See row 3 and 6. We can see. Next is rectangular hyperbola. An equation of the form xy is equal to c, where x and y are two variables. X and y are two variables and c is a constant. c क्या है? Constant है. Giving as a curve called rectangular hyperbola. इस कर्व को क्या कहते हैं? जो कर्व हमें दिया गया है rectangular hyperbola. It is a downward sloping curve. ये क्या है? Downward sloping curve है, ऊपर से नीचे आ रहा है. In the xy plane as shown in a diagram. For any two points P and Q on this curve, the areas of the two rectangulars OY1 PX1 and OY2 QX2 are same and equal to C. These are same and equal to C. If the equation of a demand curve takes the form PQ is equal to E, where is A as a constant, it will be a rectangular hyperbola. ये क्या होगा? Rectangular hyperbola, where price P times quantity Q is a constant. With such a demand curve, no matter at what point the consumer consumes, her expenditure are always the same and equal to E. Relationship between elasticity and change in expenditure on a good. Suppose at price P, हम suppose करते हैं price P and demand Q. Demand for a good is Q, and at price P plus triangle P, the demand for the good is Q plus triangle Q. At price P, the total expenditure on the good is PQ, and at price P plus triangle P, the total expenditure on the good is P plus triangle P, Q plus triangle Q. If price changes from P to P plus triangle P, the change in the expenditure on the good is P plus triangle P, Q plus triangle Q minus PQ is equal to Q triangle P plus P triangle Q plus triangle P triangle Q. For small values of triangle P and triangle Q, the value of the term triangle P and triangle Q is negligible, and in the case, the change in the expenditure on the good is approximately given by Q triangle P plus P triangle Q. Approximate change in expenditure is equal to triangle E is equal to Q triangle P plus P triangle Q is equal to triangle P Q plus P triangle Q by triangle P. This equation we can see. Not that these three equations. If note these three equations, the budget जो हमारी main summary है, we can see the budget set is a collection of all bundles of goods that a consumer can buy with her income at prevailing market price. The budget line represents all bundles which cost the consumer her entire income. The budget line is negatively sloping. The budget set change if either of the two prices or the income change. Next one is the consumer has well-defined preference over the collection of all possible bundles. She can rank the available bundle according to her preference over them. The consumer's preference are assumed to be monotonic. An indifference curve is a locus of all points representing bundles among which the consumer is indifferent. Monotonicity of preference implies that the indifference curve is downward sloping. A consumer's preference in general can be represented by an indifferent map. A consumer's preference in general can also be represented by a utility function. A rational consumer always chooses her most preferred bundle from the budget set. The consumer's optimum bundle is located at the point of tangency between the budget line and an indifferent curve. The consumer's demand curve gives the amount of the good
that a consumer choose at different level of its price when the price of other goods, the consumer's income and her taste and preferences remain unchanged. The demand curve is generally downward sloping. The demand for a normal good increase or decrease with increase or decrease in consumers income. The demand for an inferior good increase or decrease as the income of the consumer increase or decrease. The demand market demand curve represents the demand for of all consumers in the market taken together at different level of the price of the good. The price elasticity of demand for a good is defined as the percentage change in demand for the good divided by the percentage change in its price. The elasticity of demand is a pure number. Elasticity of demand for a good and total expenditure on the good are closely related. Our keywords are there: budget set, preference, indifference curve, monotonic preference, indifference map, utility function, demand, demand curve, income effect, inferior good, complement, budget line, indifference, marginal rate of substitution, diminishing rate of substitution, consumers optimum, law of demand, substitution effect, normal good, substitute, price elasticity of demand. हम ये सब इसमें पढ़ चुके हैं. Our first question is, our exercises start. First question is, what do you mean by the budget set of a consumer? We have there 12 questions. Next is, what is budget line? Explain why the budget line is downward sloping. A consumer wanted to consume two goods. The price of the two goods are rupees 4 and rupees 5 respectively. The consumer's income is rupees 20. ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था. Write down the equation of the budget line. How much of good one can the consumer consume if she spends her entire income of that good? How much of good too can she consumes if the spends her entire income of that good? Next is, what is the slope of the budget line? Question 5, 6 and 7 are related to question 4. You can see, how does the budget line change if the consumer's income increase to rupees 40 but the price remain unchanged? How does the budget line change if the price of good 2 decreases by the rupees but the price of good 1 and the consumer's income remain unchanged? And 7th is, what happened to the budget set if both the price as well as the income double? 8th question is, suppose a consumer can afford to buy 6 units of good, 1 and 8 unit of 2. If she spends her entire income, the price of the two goods are rupees 6 and rupees 8 respectively. How much is the consumer's income? You can solve it. Suppose a consumer wants to consume two goods which are available only in integer units. The two goods are equally priced at rupees 10 and the consumer's income is rupees 40. Write down all the bundles that are available to the consumer. Among the bundles that are available to the consumer, identify those which cost her exactly rupees 40. Next is, what do you mean by monotonic preferences? Next is, if the consumer has monotonic preferences, can she be indifferent between the bundles 10 and 8 and 8 and 6? Next is, suppose a consumer's preference are monotonic, what can you say about her preference ranking over the bundles 10 10, 10 9 and 9 9? मैं आप सबको ये सब कुछ ऊपर पढ़ा चुकी हूँ. You can solve this exercise. Bye bye.